So I have started recording of the context. Looping constructs in Java. So what are the looping constructs that we have discussed briefly in the previous class are, first is, For loop, very good. Second, while loop, while loop. Third, do while with a bracket. do while. Now for while, do while, all of them have, see, the looping constructs in Java are for loop, while loop, and do while loop. Now these three looping statements, all of them has, all these three statement has four basic parts. Now what are those four basic parts? We will proceed little later. First of all, what is looping constructs, or what is looping statement? What do we mean by that? The statements which allows us to repeat something. Okay, the statements which allow us to repeat a set of instructions is known as looping statements. Statements. So, yeah, all of them, whether it is for loop or while loop or do while, they are broadly categorized into entry control loop and exit control loop. Okay, what are they categorized as? Entry control loop and exit control loop. Okay, so looping constructs or looping statements. Looping statements are broadly categorized as, they are broadly categorized as, this is a category that we are going to have. The two main category are entry control and exit control. Okay. Now, what comes in entry control and what comes in exit control? Yeah, here. So what comes in entry control? Can you say? I forgot, ma'am. For loop, doesn't matter, no issues. For loop and while loop. It means in these kind of statements, the condition is tested in the very beginning. Got my point? When Yes, you are ma'am. checking the condition in the beginning, that is called as entry control loop. Okay? Yes, ma'am. That is called as entry control. Now, in the exit control loop, what's there? Do while. Yeah. So what comes in the exit control? Do while. So this statement is an exit control statement. Now, I hope you understand what is entry and what is exit. Yes, ma'am. Yeah. So let us see here how I have categorized. First of all, what is looping? It's clear to you. Repeating a set of statements again and again or a number of times is known as looping statement. Examples of looping statements are for loop, while loop, do while. Now, looping statements are broadly categorized into entry control loop and exit control loop. In the entry control loop, we are having for and while, whereas in the exit control, we have do while. Now, the thing is, what exactly do we mean by entry control and what exactly do we mean by exit control? See, I'm just giving an example. See, whenever there is a check in at the time of entry, see, when you are watching a show, say you have, what do you do when you watch a show? What exactly do you do? It can be a movie show, it can be a circus, or it can be anything. What exactly are the steps to do that?
We just sit and watch it. No, first of all, you need to buy a Oh, okay. you need to buy a ticket. Um, The very yes, first thing ma'am. is, yes, without ticket, you cannot enter into any of the shows. So very first thing is you buy a ticket. After buying a ticket, now you are having a ticket. Now, when you go to get your seat, when it is tested at the time of entry, that time it is called as Yes, ma'am. control. Okay, so your ticket is being checked in the time of entry. Okay, so watching a show, you have your ticket being checked at the time of entry. Now, see at the time of at the time of exit. Sometimes at the time of exit, the entry is being the tickets are being checked. Okay, sometimes it happens. Have you seen? Can you give examples where Yes, at the ma'am. time of exit the tickets are checked? Yes. Uh, Maybe in plane also while exiting, the boarding pass is checked. Okay, yeah, boarding pass is checked at the time of maybe at the time of your air visit or maybe at the time of your railway. They are checking your like you are having Yes, a, ma'am. yeah, you are having a pass of like that exit pass you can call it as. Okay, so when see what happens when we talk about the exit control means कि वो आपको entry तो permit कर दिया है लेकिन test कब कर रहा है at the time of Exit. leaving, at the time of exiting. Okay, and in entry control it will check it in the very beginning. In case it is not matching, it won't allow you to enter. But do while, Yes, what does ma'am. it do? Do while, what does it do? It says do. Do means you start. At least once what happens, you will start, and then that set of statements will be executed and it will check at the time of exit. You may be thinking, what is this entry, exit? No, isn't it? You may be thinking. Yes, ma'am. So first of all, every loop has four parts, whether it is for, while, or do while. So I will tell you what do we mean by entry and exit. Okay, I hope you know it, but still, in terms of programming, we'll try to understand. Now, there are four parts of programming looping statements. Now, what are those? Can you name them? Parts of looping statements. Yes, parts of looping statements. There are four parts. The first part is initialization. It means what? To give initial or starting value. Okay. Have you heard about this? Yes, ma'am. Yeah. Initialization means, yes, just to start. You start with. Okay. So that is initialization. Yeah. Second term is initialization is the first thing. These are the four parts. So I'm talking about initialization. Very first thing is initialize something. Okay. So to give an initial value, to give a starting value. Then is test expression, or you can call it as condition. Condition. Now, what do we do in this? What do we do in this? We will make a checking. I told you not at the time of entry or at the time of exit, there is certain set of conditions which are being tested. So checking or testing at the time of entry or exit. Is this clear? Yes, ma'am. Then third one. Third one is what? Can you name it? Or if you can recall? No, ma'am. Okay. So third
part is updation. Now the thing is ki how long you will repeat? How long you will repeat? So how will you get to know? So that variable which is being tested has to keep on changing. So updation. Okay. So to increase or decrease the value of variable which is being tested. ओके जिस भी वेरिएबल को आप चेक कर रहे हैं या तो वो उसको इंक्रीज होना चाहिए या उसको डिक्रीज होना चाहिए, राइट? जब वो Yes, इंक्रीज ma'am. होगा तब उसकी वैल्यू चेंज होगी, जब वो चेंज होगी तब आप उसको चेक करेंगे कि आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं. ठीक है? आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Okay, because like abhi to I'm just writing. The thing is ki how do you correlate it with? So that is the reason I asked you. Now the fourth one is that set of statement which you want to repeat. So block of code, or you can call it as what? Code block of code, or you can call it as code block. Okay, so these are the statements. These are the set of statements which you want to repeat. Okay, is this done? All the four things? Yes, ma'am. Okay, now for us we need to understand ki where are these four parts exist in my looping statements. Okay, in my for loop, in my while loop, in my do while loop, where are these parts existing? Okay, so I'll just tell you, see, first, second, third, and fourth. Okay, now let us take an example. See, usually what happens whenever we are talking about looping statements means repeating, and whenever I say repeating something means there has to be a counter which is keep on counting. Got my point? There is a Yes, counter. ma'am. Most of the times there is a counter. So whenever we say about looping, mostly we are using counter, and in rare cases we are using normal variable. Okay, so that is the reason I've written checking or testing at the time of entry or exit. Okay, so now, so initially what happens, there is a variable called as counter, and either you write counter CTR. Okay, you can use a variable counter. Variable I'm using here is a counter. I hope you are understanding. Yes, ma'am. आपका मीटर काउंटर होता है that keep on increasing when you drive your Yes, bike, ma'am. है ना, meter counter is there which keep on increasing. ठीक है ना, it cannot go on decreasing ना, it keeps on increasing. तो वो उसको हम बोलते हैं increment, and when it goes on decreasing then we call it as decrement. Okay, so variable counter, say for instance I am taking counter variable, I am taking it as I. People usually take I, C, CTR, something like that. So I usually take, let's take a variable. Variable I. Okay. Let's take a counter variable I. I'll just write it properly. Let's take a counter variable I. I told a variable counter which is keep on counting, and let's take that counter variable as I. Now, in this, what I'll do, I'm just writing with different coloring so that you can get to know, like initialization. Initial means what? To start something. Yeah, initialization is to start something. Yeah. So here what happens, I told you that I'm taking a variable called as I. So let us take initial value of I. I'm giving initial value to I as I is equal to 1. ठीक है ना? Example, I'm writing I is equals to 1. Okay. It means what?
Means we are starting as I is equal to 1. Very good. So I am starting as I is equals to 1. This is my initialization. Okay. Now it is never Yes, ma'am. necessary that you should always start with 1. You can have 0 also. You can have other values also. Got it? Yes, ma'am. So this is initialization. Now test expression or condition. Suppose if you want to execute the loop for 10 times. So what will you write? We will say I. Here, the example of test expression I'm writing as I is less than equal to 10. Okay, so this is my condition. Okay, this is my condition or test expression. This is my condition or test expression. It means the loop statements will be checked for i's value as less than or equal to 10. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. अब देखिए i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है. 1. i की वैल्यू को आप किससे चेक कर रहे हो लेस देन इक्वल टू 10 से चेक कर रहे हो. ओके. Yes, ma'am. तो अपडेट होगा. आप लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू जाने के लिए आप काउंटर को क्या करोगे इंक्रीज करोगे. ओके. सो यू विल राइट द काउंटर एज example of this one updation is I plus plus. Now what is the meaning of this sentence? Meaning of Means this I sentence, is added. I is Means added I's value by is 1. increasing. Meaning very good. I is equals to Uh, I plus 1. 1. You know? So it means I equals I plus 1. Now, this is the meaning of this sentence. Okay. Is this clear to you? Yes, I ma'am. plus plus का meaning क्या हो गया? I is equals to I plus 1. That stands for incremented. I is incremented by 1. Now, it is not necessary that you should always increase I by 1. You can increase by 2, you can increase by 5, you can increase by 10 also. Okay. So here it is initial value 1 checking against less than equal to 10 and being increased by 1. So it means I will be going for 10 times. And then block of code means what all statements you want to execute a number of times. Okay. So you just write curly open and in that you just write all the statements that you wish to write. Okay. It can be more than one line. Okay. So this is code block. Example is curly open, curly close. Inside this, you can have a number of statements which you wish to execute. Okay. Yes, ma'am. Ab dekhe. Now here. Now this is the case of increment. Okay. This is bit congested, but I hope it's clear now. Yes, ma'am. I have written a lot of things in congested form, but I think yeah. Okay. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? Yeah. So here we have seen that this is an example of initialization, test expression. This is the example of increment, and this is a block of code. Now, in case of decrement, can you give the example? Yes, ma'am. Suppose I is equal to 2, then we can take it. We can just write in the checking that I is greater than 1, maybe. Yeah, very good, very good. You are right. You are going rightly. I'm just thinking which color of pen will be better. So I'm just writing with the black color so that it is very clearly I is equals to, say for example, 10 and you said 2. Okay. Now here Yes, ma'am. I is, you said right, I is greater than equal to 1.
Okay, very good. And here, can you tell me? I minus minus. What does it mean? It means I is equal Means to I minus 1. I I is is equal equal to to I I minus minus 1. 1. Means just a second. Means I is equal to I minus 1. Okay, so this is decrement and this code remains same. Okay, so the only difference that we are getting is, the only difference that we are getting here is we start with a higher value and we check with the With a smaller one. smaller one. Yeah. Okay, so this is another example. It's overwritten, doesn't matter. I hope it's clear, no? Yes, ma'am. If I'll write it, it will not, doesn't matter, it's okay, no issues, fine. Okay, so this is how I have given. Blue is for increment and black is for decrement. Okay, so there are two types of looping you may find. One is increasing loop and the other one is counting up, Decreasing. counting down, you can call it as simply. Okay, so Yes, blue ma'am. is with increase and the black is with decrement. Okay, so this is how we have seen the first example. Okay, I mean these are the parts of looping statements. अब ये parts हमारे loop में कहाँ exist करेंगे ये हम next slide में देखेंगे. Okay, yeah. Yes, ma'am. Now let us place the position of the four parts. Okay, so looping, parts of looping. Parts of looping. Okay, now parts of looping, I'll just write once again. First is what? Now you can easily say. Repeat, please repeat it. Initialization. Yes. Second, updation. No, second is test expression. Second is test expression. Then third is updation. Then fourth is block of code. Okay. Simply we write it as block also, block of code, which we repeat. Actually initialization, test expression, updation ये सारे part of code ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग easily like you know we just try to call this as those set of, this block of code stands for those set of statements which are written within curly open and curly close, which are to be repeated. Okay, this I have already explained in my previous slide. Now I'm telling you where these exist in for loop. Okay, where this exists in while loop and where this exists in do while loop. In the for loop, okay, in for loop, I'll just, what is the syntax? We can call it as syntax. Okay, syntax of for loop. When I say syntax of for loop, it means I have for, okay, and inside the for I will have part 1. So I think I'm writing the part of loop as P1, because again and again if I'll write, it will not be soothing, no? So I'll just write it as P1. This part I write it as P2. Okay, I'm rewriting. Okay, this part is I'm writing as P1. This part I'm writing it as P2. This part of I'm writing it as P3. And this part I'm writing it as P4. I have given a name to them shortly. Okay,
so that you can Yes. just easily remember. I usually write 1 2 3 4, लेकिन चलो ठीक है, I have given it name as P1 P2 P3 P4. Means initialization when I say it is P1, test expression when I say it is P2, updation when I say it is P3, and block of code it is P4. Now let us place them. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है while for में. For में क्या होता है? For is done when we know. Okay, for is done when we know that when we know that how many times the loop is to be repeated. Am I clear to you? Yes, ma'am. When I know कि 10 times loop repeat करना है, 20 times loop repeat करना है, 5 times loop repeat करना है, then I say for loop. Then I prefer to use for loop for P1, P2, P3. That needs to be separated using semicolon. Is that clear to you? Yes, ma'am. Then P4. P4 means a number of statements which you want to execute. So simple. Okay. Syntax for is, what will you write? I have actually मैंने बहुत short में लिखा है. Generally क्या होता है, for के साथ में initialization, semicolon, test expression, semicolon, updation, then block of code. Okay. So this is how the Yes, syntax ma'am. of for goes. Now syntax of, this is the syntax of for. Okay. Now एग्जाम्पल आप फॉर का बता सकते, पीछे वाले एग्जाम्पल्स को देख करके, कैन यू से, आप यदि रिकॉल कर सकते हैं वो आई वाला एग्जाम्पल, तो कैन यू से मी? Example for Yeah. in the bracket Yes. I is equal to 1, Yes, then semicolon. semicolon, I is equal to greater than is equal to and smaller than 10. I is less than equal to 10. Yeah. I. Then semicolon, I plus plus. वेरी गुड. एंड देन इसके अंदर आप सिस्टम डॉट आउट जो भी लिखना है वो सब लिखिए. दैट इज लाइक यू नो, दैट इज फॉर यू टू टेक इट, like what all statements you want to repeat. Is this visible to you? Yes, ma'am. I'll just check it out. Okay. I'll just remove this box. Yeah. So now I'll take complete thing in one box. Okay. The syntax and the example. Okay. This is for. Okay. Now this Yes, is done for. Now same thing I'll go for. Syntax of for is very simple. It's very preferable when you know ki finite number of times. We call it as when we know that the loop has to be executed finite number of times. Finite matlab when you can count it. Okay. So when you can count it 10 times, 5 times, for example, then you can use this for loop. Okay. So this is an example. Now, second one is example of what? Syntax. while loop. Syntax of what? So while loop. See, while, see, before entering into while, we need to have a declaration. Okay. So P1 means initialization. Okay. Yes, ma'am. Then while position of P2. It means what? While के साथ में test expression. Then you have curly code. Okay. Then you have what? Then you have P4. You can call it as P4. Then you have P3. Then you have curly close. Okay. Yes, ma'am. So here in this example, in this syntax, I have syntax of while loop में P1 means initialization is here, then test expression is here, then P4 and P3 ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है.
आपको यदि P3 ऊपर चाहिए तो आप Yes, ma'am. P3 को ऊपर, P4 को नीचे कर सकते हैं, पोजीशन आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इट प्रेफरेबली वी गो लाइक दिस, P1 P2 P4 P3. Okay, it means initialization, test expression, block of code, and then Updation. अपडेशन. ठीक है, नाउ आप एग्जाम्पल बता दीजिए. अब Uh, uh, आप एक काम करो, P1 एक I. मिनट, डिक्रीमेंट वाला एग्जाम्पल बताओ. यहाँ पे मैंने इंक्रीज वाला एग्जाम्पल लिया फॉर में, है ना. आप यहाँ पे मुझे डिक्रीज. Yes, ma'am. I is equal to 10 वेरी गुड. I is equals to 10. while वेरी गुड. while in the bracket While in the I bracket, is I smaller than equal greater to than, I is greater than is equal to. greater than equal to 1, Very good. then curly bracket, then These are all code of statements to be executed. Okay, it can be yes, number ma'am. of statements which you can write inside. Okay, then Yes, ma'am. Then I minus minus. very good. Okay, so I minus minus and a semicolon and a curly close. So I hope you are clear with this, right? Yes, ma'am. आपको ये चीज क्लियर होती जा रही है ना. Yes, ma'am. हाँ, कि आपको वाइल का सिंटेक्स को कैसे लिखना है. ठीक है, अब देखिए आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आएगा कि एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है. देखो, एंट्री कंट्रोल का मतलब हुआ यहाँ पे इनिशियलाइज किया उसने i इज इक्वल टू 1. ठीक है ना, ये इनिशियलाइज किया. इनिशियलाइज करने के Yes, बाद ma'am. चेक किया यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 10 से लेस है. यस, इट इज लेस. तो वो क्या करेगा, फिर वो यहाँ नीचे आके ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और ये एग्जीक्यूट करने के बाद में यहाँ पे अपडेट करेगा. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग. देखिए, Yes, पहले ma'am. इनिशियलाइज किया. ओके, फॉर i इज इक्वल्स टू 1 उसने Yes, i ma'am. की वैल्यू 1 दे दिया. देन i इज लेस देन इक्वल टू 10. तब उसने चेक किया कि i की वैल्यू कितनी है, तो 1 लेस देन इक्वल टू Yes, 10. ma'am. As long as the condition is true, this loop will be executed. तो 1 is less than 10, तो वो लूप के अंदर आ जाएगा और वो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा. जैसे ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तब वो अपडेट के पास जाएगा. अपडेट करने के बाद क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब i की वैल्यू 2 हो जाएगी. फिर वो कहाँ आएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन में. इज 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस. तो फिर से वो लूप वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. गॉट इट. एंड देन अगेन Yes, कहाँ ma'am. जाएगा, i प्लस प्लस. तो ये जो i इज इक्वल टू 1, ये जो इनिशियलाइजेशन है ना, ये सिर्फ एक बार होता है. इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, सिर्फ एक बार. ठीक है, Yes, एक बार ma'am. ही इनिशियलाइज होगा, लेकिन ये अपडेशन और टेस्ट एक्सप्रेशन बार बार होंगे. ठीक है, बार बार वो चेक करेगा, Yes, ma'am. बार बार अपडेट करेगा, बार बार चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपडेट करेगा, फिर इसको चेक करेगा, एंड देन अगेन इट विल एग्जीक्यूट. सो this is the process flow I'm telling. And since it is checking in the beginning, that is why it is called as entry control. For is entry control. Now coming on to this while loop. देखिए, i is equal to 10, तो ये एक ही बार इनिशियलाइज हुआ. ठीक है, i की वैल्यू इनिशियली क्या हो गई, 10 हो गई. Now while i is greater than equal to 1, now what is the value of i, 10. 10 is greater than equal to 1. It has checked in the beginning. Yes, ma'am. Now if it is true, then it will execute this set of statement. और उसके बाद उसने i को एक कम कर दिया, i is equals to i minus 1. तो 10 की जगह अब क्या हो गया, 9. 9 होने के बाद again it will go for checking this expression. तो 9 is greater than equal to 1, yes, means the condition is again true. If the condition is true, it will again execute the loop. तो ऐसे कर करके i की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, तो 1 is greater than equal to 1, again it is true, it will execute the loop. Now i is equal to 1 minus 1. अब कितनी वैल्यू हो गई i की, 0. तो 0 Yes, ma'am. greater than equal to 1 क्या हो गया, false. जैसे ये लूप फॉल्स होगा, इट विल क्विट फ्रॉम दिस कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट से वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू. Yes, ma'am. ठीक है ना. Yes, ma'am. ये लूप को 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि एक एक करके कम हो रहा है. ठीक है, Yes, ma'am. अब यदि एक चीज और ध्यान देना, मान लीजिए i माइनस माइनस की जगह i इज इक्वल टू i माइनस 2 होता. देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, यदि i माइनस माइनस की जगह
यदि ये वाला स्टेटमेंट i इज इक्वल टू i-2 होता तो आप मुझे बता सकते हो कि कितनी बार एग्जीक्यूट करता वो? i-2 होता। तो एक एक बार में i। दो दो कम होता, ठीक है ना, दो दो कम होता। देखो ओके, 10 है, 10 से अंदर आ गया। so yes ma'am, 5 times। हाँ, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू टेल मी। वेरी गुड, वेरी क्विक। ठीक है, और यदि i इज इक्वल टू i-5 होता तो? 2 times। वेरी गुड, दिस इज व्हाट अ क्विक आंसर आई वांटेड फ्रॉम यू। वेरी गुड। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्या है? Ma'am, a doubt। हाँ, यस। Ma'am, then what's the difference between for loop and while loop except for syntax? Means there should be some different usage. हम्म, yes, there are different uses. See, preferably for जो होता है ना, वो हमको ना जब फाइनाइट टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करना होता है ना, तब हम प्रेफर करते हैं। जैसे हमको पता होता है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी में हम यूज Yes, करते हैं। ma'am. ठीक है, फॉर हम सर्टेनिटी में यूज करते हैं कि भाई हमको 10 टाइम्स ही करना है, 20 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है। आई मीन इट इज फिक्स्ड, फाइनाइट, फिक्स्ड। ठीक है, और वाइल जो है ना, हम अनसर्टेनिटी में भी यूज कर सकते हैं। हम बीच में यहाँ पे ना कंडीशन डाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर को हम अनसर्टेनिटी में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाइल को हम एक्चुअली ना, ये तो मैंने आपको सिंपल चेक्स बताए हैं, इसके अलावा भी थोड़े से कैरेक्टर बेस्ड चेक्स होते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर बेस्ड चेक्स होते हैं उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये ना, जब हम वाइल को हम लोग अनसर्टेन टाइम्स में प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. दिस इज फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग इज कि फॉर और डू वाइल, सॉरी, फॉर और वाइल में हम फॉर को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि फॉर ना बहुत कॉम्पैक्ट, छोटा सा है। आप देख रहे हो इस कंस्ट्रक्ट को, जब आप लिख रहे हो, है ना, तो आप यदि इस कंस्ट्रक्ट Yes, को ma'am. देखोगे ना, तो ये जो है ना, इसमें 3 अलग अलग प्लेसेस में P1, P2, P4, P3 सबका प्लेस अलग है। ठीक है ना, तो इट इज नॉट Yes, ma'am. दैट कॉम्पैक्ट। लेकिन फॉर में क्या है, इंटरेस्टिंगली ये क्या है कि एवरीथिंग इज फ्रोजन इनटू अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो जनरली लोग क्या होता है, फॉर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. हालांकि बहुत ज्यादा आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम फॉर करेंगे तो वाइल नहीं कर सकते, वाइल करेंगे तो फॉर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सिनोनिमसली आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आइदर दिस और दिस वन। ठीक है, Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट इज डू वाइल। अभी क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? Yes, ma'am. आपको अनसर्टेनिटी वाली पॉइंट नहीं समझ में आई होगी, ये मैं आपको समझाऊंगी जब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स लेंगे, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स लेंगे ना, तब आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। तब आपके जो दिमाग में ये क्वेश्चन आया ना, वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंटेक्स ऑफ, Yes, ma'am. सिंटेक्स ऑफ वाइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो डू वाइल होता है ना, इसके वाइल में सेमीकोलन लगना जरूरी है। ओके, इट्स वेरी वेरी Yes, असेंशियल। ma'am. आपको ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो सिंटेक्स ऑफ डू वाइल है, इसमें हमारे वाइल में सेमीकोलन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग कैसे लिखते हैं और पोजीशंस क्या होती हैं? देखो, आपको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देनी है, तो P1, P1 हो गया आपका। आफ्टर राइटिंग P1 आप लिखते हो डू। डू मीन्स यू हैव टू डू इट। व्हाट यू नीड टू डू, आप लिखोगे P4। आपको क्या करना है? P4 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको क्या करोगे? अपडेट करोगे। अपडेट करने के बाद आप क्या करोगे? वाइल P2। गॉट इट? Yes, ma'am. ये चीज आपको क्लियर हुई? अब आपको ये चीज Yes, बहुत ma'am. अच्छी से, हाँ ये, लेकिन आप जब सिंटेक्स लिख रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ना, कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, वेन एवर वी आर राइटिंग वी आर यूजिंग दिस करली ओपन, करली क्लोज, और करली क्लोज के तुरंत बाद हम वाइल लिखते हैं P2। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि डू स्टार्ट एंड एट द टाइम ऑफ एग्जिट, एग्जिट के समय चेक करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, P2 बिगनिंग में चेक कर रहा था, एंट्री कंट्रोल।
यहाँ पे कहाँ चेक कर रहा है? एट द टाइम ऑफ एग्जिट। Exit. हाँ, बाहर जा रहा है, देखिए करली क्लोज मतलब एग्जिट हो गया, एग्जिट के टाइम चेक कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, सो डू व्हाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। आपको पोजीशन समझ में आ रहा ना? व्हेन आई एम राइटिंग P1 P4 P3 P2, आपको ये चीज Yes, क्लियर हो ma'am. रही ना? ऐसा तो नहीं कोई Yes, कंफ्यूजन? ma'am. ऐसा तो नहीं है No, ना, ma'am. कंफ्यूजन वाला चक्कर तो नहीं है ना? ओके फाइन। Ma- ठीक है, अब आप एग्जाम्पल मुझे बताइएगा, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अपने मन से थोड़ा बहुत चेंज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आपको आइडिया हो गया है हाउ टू गो। तो इनिशियल वैल्यू चाहे तो आप इंक्रीमेंट ले सकते हैं, चाहे तो आप डिक्रीमेंट ले सकते हैं, आपके ऊपर है। yes, ma'am. I is equal to 3. वेरी गुड। Then do. या डू, Then bracket open. करली ओपन, Then वॉट एवर यू वांट टू डू, um, वॉट एवर यू वांट टू P4. डू। ओके, P4 is coding. Yes, ma'am. हाँ P4 मतलब वो डैश 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 मतलब जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट दिस कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, ये जो डैश डैश लिखा है ना, SOPLN स्टेटमेंट हो सकता है, कैलकुलेशन स्टेटमेंट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, गॉट इट। Yes, इस ma'am. पे हम बाद में फोकस करेंगे। जो P4 मतलब कोड ऑफ ब्लॉक, कोड ऑफ ब्लॉक मतलब कुछ भी आपका आउटपुट स्टेटमेंट हो सकता है, प्रोसेस स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट। Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है या ब्लॉक ऑफ कोड है, कोड ब्लॉक बोलिए या ब्लॉक ऑफ कोड बोलिए, दिस कैन बी द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच यू वांट टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन और फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट। ठीक है, देन अब बताइए। Then I plus plus. यू हैव स्टार्टेड विद अ ग्रेटर वैल्यू, तो आपको 3 से ऊपर जाना है कि 3 से कम करना है? ऊपर जाना है. वेरी गुड, तो आप लिख सकते हैं I प्लस प्लस। ठीक है, Then bracket close. यस, While वाइल, in the bracket यस, I is smaller than equal to 30. ओके। तो अब ये आप बताइएगा ये कितने टाइम्स जाएगा? ये बहुत 27 टाइम्स मेरे ख्याल से जाएगा। थ्री थ्री इंक्लूसिव है, थ्री, तो 23 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितने टाइम्स जा रहा है? कितने टाइम्स जाएगा? 27 times, I think. जहां तक मेरा ख्याल है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इट शुड गो फॉर 28 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि एक बार आ जाएगा और लास्ट में चेक होगा, तो 28 टाइम्स मुझे ऐसा लग रहा है। हम इसको चेक करेंगे। शेल वी डू दिस चेकिंग? करें हम Yes, लोग? ma'am. हाँ, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा। मैं जल्दी से आपको एक एग्जीक्यूशन पार्ट में लेके चलूंगी। ओके, और मेरे ख्याल से लूपिंग स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। Yes, ma'am. कहीं डाउट तो नहीं है आपको? No, ma'am. एग्जिट कंट्रोल भी आपको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है ना, एग्जिट कंट्रोल आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जिट कंट्रोल कैसे हो रहा है, एंट्री कंट्रोल क्या है। एंड जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, सो नाउ अब मैं आप लोग आपको ना एक्चुअली मुझे ये भी बताना था, ऑपरेटर्स भी बताना था, लेकिन ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई एक्सटेंड द क्लास फॉर 10 मिनट्स मोर और Yes, ma'am. You can extend. ओके, सो फर्स्ट आई विल मेक अ चेक फॉर दिस लूपिंग। पहले मैं इस लूपिंग को चेक करूंगी, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जो हम लोग चेक कंडीशंस होते हैं ना, ये जो चेकिंग कर रहे हैं ना, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ये देखो I ग्रेटर देन इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 30, है ना, I लेस देन इक्वल टू 10, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर इट इज? Relational operator. ठीक है, अब मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर में लेके चल रही हूँ।
और इसके बाद हम ऑपरेटर्स को बिल्कुल ब्रीफ में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. यू हैव टाइम, नो इश्यूज? ऐसा तो नहीं कि यू फील No, एग्जॉस्टेड? ma'am. No, ma'am. Okay, fine. So I'm just taking you to GDB online compiler. Just a second. Compiler screen is visible to you. What is the first step I need to do in working on compiler? Java. Change the language to Java. Yeah, very good. Select the language from the list as Java. Then I'm quickly working on the program of do while only. ठीक है, मैं for वाला नहीं कर रही हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. I'm saying int I is equals to 3. Okay, then curly open. Can you say what is the mistake here in this line? Can you tell me? Int I is equals to 3. Int I is equals to 3. I Bracket is missing. Yeah, think. I just did not write the bracket. ठीक है? Semicolon. Yes. Semicolon. Terminator. Every sentence needs a semicolon, a sentence terminator. ठीक है? So int I is equals to 3 means you are given an initial value. Then you say what? Do. Okay? Do. Now do what? Do system.out.print hello world. And I'm just saying hello world plus I'm showing I also so that you can easily understand how many times it's going. Okay, now this is my P4. ठीक है ना, ये block of code हो गया. Got it? Yes, And ma'am. then I plus plus. Okay, so this is done. After that, yeah. Then after that, what is missing here? After that, do ka while I is less than equal to 30. And do while must have, the while must have a semicolon. It's very, very essential. Now, is this code clear to you? ये आपको clear हो गया ना? देखिए आपने जो बोला ना मैंने वही लिखा है, ठीक है? See. Yes, ma'am. You told me Yes, I is ma'am. equals to 3. I have taken this line, then I have do, then I have system.out.println hello world I, and then I have I plus plus while I is less than equal to 30. Let's execute it. But the thing is, how will you understand how many times it is executing? Doesn't matter. Let's see how it's going. Okay, 30. It's displaying till 30. And starting from 3. Okay. So you just Yes, ma'am. 3, 4, 5, 6, 7, 8. मुझे तो ये 28 टाइम्स लग रहा है. अब कैसे गिनेंगे, आपको गिनना पड़ेगा ये स्क्रीन पे. अच्छा, एक काम करती हूँ, ठीक है? व्हाट आई एम डूइंग, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग इट एज, see, I'm making a change in my program. You know this ना, system.out.println, और आपको स्लैश, Yes, ma'am. हमने एक स्लैश टी लगा दिया, ठीक है? स्लैश टी लगाएंगे ना तो हमारे को टैब्स में दिखेगा, तो यू कैन काउंट इट. अदरवाइज राइट नाउ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू काउंट ना. Let us count it. Let us see how does it go. In this it will be quickly visible to us. Okay, see, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Got it? Yes, ma'am. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक बार ज्यादा क्यों हो गया, ठीक है?
एक बार ज्यादा इसलिए हो रहा है, ये आपने तो 27 क्या हुआ, आपने 30 से एक लेस ले लिया ना, 3 से 30 के बीच में इफ यू काउंट तो इट विल बी गोइंग 28 टाइम्स। आप एक बार अपने फिंगर्स पे भी काउंट करके चेक करिएगा। ओके, आर यू Yes, गेटिंग ma'am. इट? है ना? तो देखियो स्लैश टी से क्या हो रहा है कि एक टैब स्पेस आ जा रहा है। ओके, स्लैश टी से एक Yes, ma'am. टैब स्पेस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा काउंटिंग आसान हो गई है, और इस काउंटिंग को आप थोड़ा सा और बेटर बना सकते हो। अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है आपको रीड करने में, तो आप इसको और कन्वीनियंट बना सकते हो इस तरीके से। मेरे को लग रहा है ये वाला आउटपुट और ज्यादा रीडेबल होगा। 1 2 0 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 4 16 4 5 20 4 6 24, और ये 4 जो हो गया वो 28 हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग। So Yes, ma'am. 28 times the loop will be executed. Is that clear to you? Yes, ma'am. ये do while आपको clear हो गया? Yes, ma'am. Same thing you can apply with for also and while also. Okay. Yes, ma'am. And इसी को आप while से करके देखोगे क्या, do while की जगह, कि let it go? Yes, ma'am. I have no You problems. do Like, one thing, you try on your own and check it and tell me. ओके, फॉर में कितनी बार okay, एग्जीक्यूट हो रहा है, वाइल में कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, डू वाइल में कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है. सो आई हैव शोन यू विद द एग्जांपल विद डू वाइल. ओके, एंड इन केस ऑफ doubts you can ask me tomorrow. Okay, yes, so ma'am. this part is done. Now operators are left. I can't take operators in a very short span of time, so we will discuss operators by tomorrow. Okay, let's have a quick Yes, review, because in a very short period of time we can't discuss on operators. So let's have a quick review of what we have done. You just quickly tell me to start with. yes, ma'am. Looping statements are categorized. First of all, looping statements, there are three examples: for loop, while loop, and do loop. Then looping statements are categorized as entry control and exit control. In the entry control, we have for loop and while loop as examples, and in exit control, we have do while. For the entry control means the condition which are checked at the beginning, and the exit controls means that the conditions which are checked at the last. Very good. Then we have read about the parts of looping statements, which are: number one, initialization, which means to start the value, uh, and this is done only one time. Very Then then number two, test expression or condition, which means checking or testing, like if I is greater than or smaller than, etc. Then three is the updation, which means to increase or to decrease the value to the last extent. Then fourth is the block of code. That means that the set of statements which you want to repeat, like how many times you have to repeat, etc. Then we have seen the syntax for, a while, and do while. The syntax for is very in a compact way, and for the syntax for while is in a expanded form. elaborated or expanded way, right? Yes, ma'am. And in the for and while loop, we do checking, means the second part, the test condition at the beginning, and in the do while loop, we do the checking, means the second part at the last. Very good. So we have done this, and now what is the work assigned to you is, I have shown you the program with do while. You test the same program using for and while. Okay, and another very important thing is, this do while is preferably done for the menu based programs. Okay, Yes, ma'am. menu based programs. Now what are these menu based programs? You will see it in the upcoming classes. And
Menu means कि if at least you have to execute the loop once. ठीक है ना, ये do while जो है ना, it is executing the loop at least once. Okay, so it is Yes. allowing you to do and then it is checking the condition at last. मतलब ये जो I is equals to 3 है ना, ये beginning में check नहीं हुआ है, it is checked here at the last. Okay. Yes, ma'am. So my assignment to you is test the same do while program here, which I have written with for and while, and show me the outputs. Okay. And if you have any doubt, you can ask. No, ma'am. Okay. So till then, take care. May God bless you. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye.